ओके। आई नो तुम लोग क्या सोच रहे हो कि वापस ये वाले मॉडल क्यों, फाइनल लैप मैथमेटिक्स क्यों। तो रिसेंटली मेरी स्पीड बहुत कम हो गई है और मुझे कुछ तो भी करके वो स्पीड वापस बढ़ानी है, बिकॉज 18 दिन में मेरी एडवांस करवा ली है। सो या मुझे वो स्पीड बढ़ानी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कुछ तो भी ऐसा करूंगा जो कि सिर्फ प्रैक्टिस रिलेटेड है, उसमें थोड़ा लर्निंग पार्ट कम है, राइट। सो दैट्स वाई ये या चलो फिर स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी मैं पूरा एक बार कर चुका हूँ, तो इसमें लर्निंग पार्ट तो कुछ बचा नहीं, अब सिर्फ सॉल्व करना है, राइट। सो चलो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ रियल z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू a स्क्वायर ऑफ 2 वेयर z इज अ कम। अच्छा ठीक है ना, तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, तो फिर 2a स्क्वायर का रियल पार्ट है तो फिर 2a स्क्वायर आयोटा है, फिर 2 स्क्वायर नेगेटिव आयोटा, z इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, सो दो सॉल्यूशंस इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, second is the number of points xy lying inside on the circle or on the circle and satisfy the equation. This equation is, तो इसके अंदर ओके देन एक्स प्लस वाई स्क्वायर राइट लेस देन 9 एंड दिस इक्वेशन राइट। अच्छा तो इसको अपन लिख सकते हैं, oh and it's equal to 4 sin square, I think yeah it's of that form। तो पहले मैं इसको लिखूंगा tan square x plus cot square x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sin of y का स्क्वायर, right? Yeah, which means that tan square x plus cot square x, which is, well, not exactly what I want, but जो भी है। So tan square plus cot square, that is equal to, so 2 sin y का स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर लगा दिया, 2 mod ऑफ sin y चाहिए रहेगा ना अपने को, राइट। अब अच्छी बात ये कि ये चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर ऑफ 1 है, एंड दिस थिंग इज लेस देन और इक्वल टू 2, व्हिच मींस कि एक ही जगह पे इक्वल होगी जब ये एक्चुअली 2 हो जाए। That happens whenever tan x is equal to plus minus 1, right? Okay, और y क्या होगा, so this should be equal to 2, मतलब कि right, so sin y is equal to plus minus 1 as well, मतलब क्या होगा कि x is equal to n pi plus or minus pi upon 4 and y is equal to m pi plus or minus pi upon 2। अब क्या है, इसको इसमें पुट कर डालते हैं, राइट ऑन दैट थिंग, ये हो जाएगा, पाई तो अपन बाहर निकाल लेंगे जो भी है, क्योंकि नंबर ऑफ दिस इज जस्ट वियर्ड। ओके, n प्लस और माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस m प्लस और माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू व्हाट, एक्चुअली लेस देन, राइट, लेस देन और इक्वल टू 9 अपॉन पाई स्क्वायर। ओके, पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 है, तो दिस इज लाइक अप्रोक्सीमेटली 0.9। तो फिर देखते हैं कौन सी चीज़ें काम कर सकती है, लेट्स ट्राई आउट। अच्छा तो n और m जो रहेगी, yeah this is kind of weird, ठीक है, I need to think of something else, you can do it like this thing ना, बट करना तो पड़ेगा ही ना अपने को। n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 16 प्लस m, और इसमें प्लस माइनस चाहिए एनीवे, m स्क्वायर प्लस और माइनस m अपॉन, well nothing, प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू ऑल ऑफ दिस, इट इज नॉट इक्वल टू 9 अपॉन पाई स्क्वायर, तो इसको उधर भेज दो, राइट। ओके, दैट्स लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 9 अपॉन पाई स्क्वायर माइनस दिस इज लाइक 4 अपॉन 16, मतलब कि माइनस 5 अपॉन 16 आ जाएगा। ओके कूल, अब अपने को करना है इसका कितने सॉल्यूशन से जो सेटिस्फाई करते हैं। ओके ये तो बड़ा अजीब हो गया, हाउ वुड आई नो, हाउ वुड आई नो, दिस इज नॉट गोइंग गुड, प्लस माइनस n अपॉन 2, यहाँ पे प्लस माइनस m है, और m के, yeah, so depending on m you can actually get this thing, I mean isn't this thing like y is equal to basically m pi plus pi upon 2 बोल दो, because माइनस वाला भी इसमें आ ही जाएगा, so then why even care about this, it's just this thing। okay awesome, interesting। हम क्या कर सकते हैं फिर, that m square plus m is of course less than or equal to 9 upon pi square, because ये जो चीज़ थी ये स्क्वायर में, ओके वो पॉजिटिव चाहिए फिर वो सब, and of course ये जो चीज़ रहेगी that will be positive in any case, because n times of n plus minus 1 upon 2, so n तो
well, and can be negative as well, but then अच्छा वो अपने आप negative हो जाएगा ना. हाँ ठीक है ना, फिर then this is always positive. What does that mean? So ये चीज जो है वो approximately how much is this by the way? अब ये तो positive है at least, and ये भी positive है. It's like 0.9 or something. So 0.9 minus this thing यानी कितना? 5.16 is oh god, ये 2.2 power 4 आ रहा है, तो 5 power 5 upon 10 power 5. 5 power 5 is 3125 I think. So 0.031, हाँ सोच में ऐसा हो जाएगा ना. So 5 power 5 power 2 25, 3 125, 4 625, 5 3125. फिर अपने को डिवाइड कर 10 पावर 5 करना है, नहीं 10 पावर 4 करना है सॉरी, मतलब कि या 0.3125. तो ये हो जाएगा 0.9 माइनस अप्रॉक्सीमेटली 0.3 मतलब 0.6. सो 0.6 मतलब क्या क्या हो सकता है, m इक्वल टू 1 ट्राई कर सकते हैं अपन, तब ये हो जाएगा 1 प्लस 1 ओ बहुत बड़ा हो गया ना, राइट. दिस वांट 2, दिस जस्ट वांट 2. वेट बट दैट्स जस्ट नॉट गुड बिकॉज अच्छा ये पॉइंट, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही अजीब हो रहा है. इसका ये कि मतलब m जीरो होना चाहिए या फिर -1, राइट. -1 आल्सो वर्क्स. m इक्वल टू -1 और 0, बस अदरवाइज कुछ और रहा देन या दैट्स प्रॉब्लमेटिक बिकॉज सपोज तुमने -2 डाली, 4 माइनस 2 2 हो गया, बहुत बड़ा हो गया, राइट. ऑफ कोर्स तब वो इंक्रीज करना, सो ओनली टू वेज, राइट. m तो अपने को समझ गया, और n के बारे में क्या बोल सकते हैं. सो जब m 0 और 1 -1 दोनों टाइम्स, ये तो मर गया, जस्ट दिस थिंग n स्क्वायर प्लस और माइनस n अपॉन 2 इज इक्वल टू पॉइंट लेस देन और इक्वल टू 0.6 और समथिंग. तो n क्या हो सकता है, कैन बी 1 ट्राई कर सकते हैं, 1 प्लस 1, हाँ तो फिर 3 अपॉन 2 आएगा विच इज नॉट गुड, सो 1 माइनस 1 अपॉन 2 वर्क्स, राइट. सो दिस कैन बी 1 माइनस 1 अपॉन 2. ओके, और क्या हो सकता है, n 0 हो सकता है, या दैट आल्सो वर्क्स. एंड सो और क्या हो सकता है, n कैन बी, और ये प्लस माइनस में अपन गिन रहे हैं बीच में, 1. ओके, व्हाट अबाउट -1? हाँ -1 भी फिर 1 माइनस 1 अपॉन 2 ही पर आ जाएगा, राइट. ओके, नहीं फिर वो तो सेम ही हो रहा है ना, बिकॉज ये मतलब ये चीज तो सेम हो रही है. सो लाइक -1 प्लस माइनस, हाँ. ओके, इंटरेस्टिंग. ओके, थोड़ा सा अलग है फिर, ये थोड़ा सा अलग है बस. सो फाइन, -1 डाल दो इसमें, सो जस्ट 1 माइनस 1 अपॉन 2, दैट आल्सो वर्क्स आउट, बस 1 अपॉन 2 0.5 लेस देन 0.6. ओके, ऑसम. और क्या सकता है, -2 हो सकता है क्या, 4 प्लस और माइनस 1, नहीं नहीं. सो यही तीन है, मतलब 6 सॉल्यूशंस रहेंगे ना इसके, और समथिंग देख क्यों नहीं रहा है इसमें, 6 सॉल्यूशंस और व्हाट, तो ये हो रहा है इसमें, इसके 6 चाहिए इसमें. ये क्या है, 2 4 8, आई डोंट गेट इट. कुछ गलत हुआ क्या, कसम से गलत हुआ था, तभी ऐसा होगा ना कि उसका कुछ गलत हुआ तभी ऐसा हो रहा है. नहीं यार, बट गलत तो कुछ होना नहीं चाहिए था इसमें. कैन एम बी एनीथिंग एल्स, नो इट कांट बी. 2 वगैरह वो सब तो चलेगा नहीं. तो फिर क्या है, इसके 6 सॉल्यूशंस आ गए, और इसमें तो है नहीं. हाँ, इट्स नॉट इनफाइनाइट, वो तो गलत है. सिर्फ 2 सॉल्यूशंस, आई डोंट थिंक सो. एम को 0 डाल दो, राइट. दैट एक्चुअली वर्क्स, उसमें अकाउंट बचेगा इसमें. सपोज m 0 या फिर -1 है, देन दिस इज नॉट गोइंग गुड. इन बोथ केस हमारा पाई अपॉइंट और नेगेटिव पाई अपॉइंट आने वाला है. सो पाई स्क्वायर अपॉन 4 तो ऑलरेडी आ ही गया, प्लस ये चीज, सो यू नो n प्लस 1 अपॉन 4, उसका स्क्वायर टाइम्स पाई स्क्वायर, दैट इज लेस नॉट इक्वल टू 9. बेसिकली अपने को ये करना है. हाँ ना, 9 अपॉन पाई स्क्वायर तो कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लमेटिक क्या है, व्हाट इज लाइक पाई स्क्वायर. पाई स्क्वायर इज लाइक 9 पॉइंट, सो 9.8, नहीं वेट,
9.8 नहीं 9.7 समथिंग था, राइट? 9.78 or something. I don't know, 9.8 low approximately because pi square equal to g. I don't think ये correct value थी, but fine. I mean, what can go wrong? 0.9 के पास में तो है यार, ये क्या गलत हो रहा है? थोड़ा बड़ा है उससे, yes, but what's the big deal? It is close to bigger than 0.5, less than 1, तो ये काम कर जाएगा मतलब, yeah, this should really work. थोड़ा बड़ा हुआ तो इफेक्ट अच्छा है ना, बिकॉज ये एग्जैक्टली फिर 0.6 के पास में आ जाएगा. ओके, ये तो सही नहीं हो रहा है, इससे मेरे 6 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, बट हाउ कैन दैट बी करेक्ट? y इक्वल टू पाई अपॉन टू नेगेटिव पाई अपॉन टू आ रहा है. अच्छा, तुम्हारी जितनी सॉल्यूशन वो इवन में आएंगे एक्सेप्ट जब जीरो हो जाए. तो जब x जीरो हो जाएगा देन क्या ही कभी जीरो हो सकता? ओ, ये कभी जीरो नहीं हो सकते इनफैक्ट. ओह, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू बी जीरो. ठीक है, तो अपने को हमेशा इवन नंबर सॉल्यूशंस मिलेंगे, दैट इज एटलीस्ट समथिंग यू नो. बट कितने? तो दो तो ऑलरेडी, तुम्हारा एक सॉल्यूशन आया तो तुम्हारे दो तो ऑलरेडी आ जाएंगे, तुम्हारे दो अलग अलग. ठीक है ना? जब x को जीरो कर डालो एंड y को पाई अपॉन टू कर दिया, इट वर्क्स. ओके, x जीरो नहीं हो सकता. x को पाई अपॉन फोर कर दिया, इसको पाई अपॉन टू कर दिया, राइट? दैट्स गोना वर्क आउट. और क्या, थ्री पाई अपॉन फोर और पाई अपॉन टू कर डालेंगे, राइट? या सो वो दोनों काम करते, दैट दैट लाइक ओके, फोर सॉल्यूशंस एटलीस्ट हो जाएंगे. ये गड़बड़ हो रही है, आई कैन जस्ट सी दैट कुछ भी गड़बड़ हो रही है. व्हाट एग्जैक्टली? अच्छा, ये जो अपनी n की वैल्यू थी, एक में निगेटिव था, राइट? तो या सो इस वजह से हर 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 अपने को दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. n जीरो हो सकता है क्या? पाई अपॉन फोर चल जाएगा. इट कैन ऑल्सो बी जस्ट थ्री पाई अपॉन फोर या फिर नेगेटिव थ्री पाई अपॉन फोर. तो एक्स की क्या वैल्यू है? जीरो, पाई अपॉन फोर, सॉरी एक्स वैल्यू से पाई अपॉन फोर, थ्री पाई अपॉन फोर, नेगेटिव थ्री पाई अपॉन फोर, नेगेटिव पाई अपॉन फोर, बिकॉज इसमें दो आएगी, तो ये सिर्फ जीरो नहीं होगा एक्चुअल में इसमें. हाँ, ये जीरो हो गया, बट वहां पे प्लस माइनस जो है उस वजह से दो आएंगे इनफैक्ट, राइट? इसमें एक्चुअल में दिस टाइम्स टू चाहिए अपने को, विच मीन्स इन रियलिटी अपने को 8 सॉल्यूशंस मिलेंगे. सो सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब तुम लोग समझ रहे हैं मेरी स्पीड कैसे स्लो हुई है, जैसे ओवर एनालिसिस और ये सब. या थर्ड, थर्ड इज दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, सो एक्स पावर 100. माउस को क्या हो गया? बस मेरे माउस की प्रॉब्लम. हाँ, अब चल रहा है. ओके, ये इंटीग्रेशन क्या है? एक्स पावर 1005 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर 200, सो 2010. हाँ ठीक है, जस्ट पुट एक्स पावर 1005 इज इक्वल टू यू, राइट? तो उसका टू टाइम्स हाफ, इट्स लाइक यू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा नीचे. ओके, यहाँ पे और नीचे क्या है? सो इसका फोर टाइम्स कितना होता है? फोर और फिर जीरो, टू जीरो आएगा. लाइक इट्स जस्ट यू पावर फोर बट दैट टाइम्स ऑफ एक्स, राइट? एंड यू वांट डी एक्स ओवर देयर. So yeah, this just means like 1005 dx. Okay, x power 1004 dx, that is equal to du. But then remember ये चीज क्या है? Just 1005 and then you got u upon x. dx is equal to du. So मतलब कि dx upon x is just equal to du upon u. But one upon, yeah, it's like 1 upon 1005 कर डालो and then it's just this thing, u plus square root of u square plus 1. यहाँ पर जाएगा du. ओके, और ये सब अपॉन आप यू पर, हाँ वो आ जाएगा जस्ट यू पावर फाइव इन दैट केस, राइट? आई होप दिस इज करेक्ट. एनीवे, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/1005, वो तो चले जाएगा. जस्ट यू पावर नेगेटिव फोर प्लस, ओके, ये इजीली नहीं कर सकता मैं. लाइक टू यू प्लस वन, वो नहीं काम आएगा, राइट? तो यू कैन ऑलवेज सेंड यू स्क्वायर इनसाइड. तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? ये करेक्टली किया ना मैंने? करेक्ट ही किया ना? बिकॉज इट्स लाइक यू पावर फोर. ओह, इसका स्क्वायर चाहिए, सॉरी, स्क्वायर चाहिए इस चीज का स्क्वायर पर्टिकुलरली. ओके, ऑसम. तो ये क्या हो जाएगा? 1/1005 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस, चाहिए दो, लाइक टू यू स्क्वायर प्लस वन प्लस टू यू स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वन एंड दैट थिंग अपॉन
u पावर 5 जो भी है just 1 upon 1005 and then यहाँ पे जो है 2 u power negative 3 उसका इंटीग्रेशन it's like 2 upon negative 2 u power negative 2 फिर plus u power negative 5 का इंटीग्रेशन just like plus 1 upon negative 4 u power negative 4 okay और ये सब so क्या है ये 2 upon u power 4 so sort of u square plus 1 and then upon u power 4 right so ये काम करो u को अंदर डाल देते हैं just 2 square root of 1 plus u power negative 2 और यहाँ पे की जगह u power negative 3 as expected just dx okay du sorry इसका डेरिवेटिव क्या होता है just negative okay वो सब so इसमें negative एक पुट कर दो and then you are good to go so negative फिर वो negative 2 u power negative 3 du that's just equal to d u power negative 2 यहाँ पे plus 1 upon 2 है power plus करो 3 upon 2 negative 2 third and then well yeah like 1 plus u power negative 2 की power 3 upon 2 this would be the solution right so 1 upon 1005 let's see this is like negative u power negative 2 negative u power negative 4 upon 4 then negative 2 third and just got 1 plus u squared upon u squared की power 3 upon 2 which is negative बाहर निकला negative 1 upon जो भी है इसमें क्या क्या है इसमें हर जगह पे 12060 तो एक काम करो ना फिर 4 बाहर निकालो जस्ट negative 1 upon 4020 अच्छा आपने कि 1 तक इसको 3 टाइम्स करना पड़ेगा ना आपको तो 3 भी बाहर निकाल लो just this thing 12 से मल्टीप्लाई करते हैं ना so 12060 और 12 अंदर ले आओ just you know oops 12 upon u squared okay plus 3 upon u power 4 और यहाँ पे क्या आ रहा है plus 8 times 1 plus u square की power 3 upon 2 upon like u power 3 of course u बाहर निकाला just negative 1 upon 12060 फिर यहाँ पे आ जाएगा u power what 4 बाहर निकाल लिया because so तुमको हाँ हर जगह पे x पावर यही चाहिए ना अभी कूल फिर वो बाहर निकाल कर क्या मिल रहा है 12 u squared plus 3 plus 8 u times ये चीज like 1 plus u square की power 3 upon 2 now we have to somehow simplify this thing कैसे okay so u अपना क्या था by the way u was x power 1005 just put that in there so ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा okay तो ये सब किया इसमें और ये कैसे फैक्टर बाहर आ गया this is weird it's like u plus okay u square plus अच्छा I think ये ऊपर किया so negative 1 upon 12060 u power 4 let's see ये तो easily काम नहीं कर रहा है unfortunately like 1 plus u square तुम्हारा बाहर कैसे आया इसमें u power 4 समझाऊं but 1 plus u square how did that happen there should be a 3 over there or something अगर यहाँ पे 12 होता that would have made sense but it's not so हाँ और मतलब यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर अच्छा वो तो यहाँ से आएगा हर जगह पे 8 है तो क्या आई गेट क्या हो रहा है ये u है राइट ओके हमारा ये बाहर आएगा somehow think about it इसमें से u स्क्वायर प्लस 1 फैक्टराइज अपन नहीं कर सकते राइट दैट वुड बी नॉट गुड तो फिर अपन ये कैसे करेंगे आखिर आई मीन यू डेफिनेटली नीड yeah you definitely need that so how is that going to happen oh I know because तुम constants खुद से डाल सकते हो like yeah because we can do that why don't we put another constant such that वो हाँ such that वो factorization हो जाए I mean, that would be nice so अपन x u power 4 okay k u power 4 directly इसमें insert कर सकते हैं right इस चीज में it won't change anything because हमारा सिर्फ constant ही रहेगा isn't that awesome okay so कुछ तो भी ऐसा डालो कि वो फैक्टराइज हो जाए हाँ yeah like u square plus 1 so you know k this is u square equal to v so v square plus 12 v plus 3 इसका solution एक v equal to negative 1 आ जाए right that would happen so just k minus 12 plus 3 equal to 0 तो k is equal to मैं 9 डालना चाहिए
So just 9u⁴ इसमें पर अगर अपन इंसर्ट कर दिया, इट्स लाइक दिस थिंग 9u⁴ प्लस 12u² प्लस 3, इसको फैक्टराइज करते हैं जस्ट 9u² टाइम्स u² प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ u²। हाँ, तो फिर 9u² प्लस 3 आ जाएगा इसमें, और फिर u² प्लस 1 बाहर आ जाएगा इन दैट केस। ओके, ऑसम। 9u² प्लस 3 इनसाइड है, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या प्लस 8u² प्लस u², दैट मेक्स सेंस, और फिर प्लस कॉन्स्टेंट वगैरह जो भी है। तो इसलिए वो लास्ट टाइम का मेरा इतना प्रॉब्लम किया था, इट्स लाइक -1 अपॉन, हाँ वो सब है। और फिर यहाँ पे चाहिए u² प्लस 1, दिस इज u² प्लस 1, यस, एंड देन यू वांट 9u², यस इज 9u² प्लस 3 चाहिए अपने को, यस, एंड देन प्लस 8u²। सो डी इज द आंसर आई गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा है। सो जब भी, ओके, फोर्थ fourth is if a1 a2 a3 are okay positive numbers in GP and these are positive real such that a power 1 upon x1 is equal to a2 power 1 upon x2 is equal to a3 power 1 upon x3, then x1 x2 x3 are in, ये positive numbers in GP हैं, ये positive numbers such that this happens, so let's just say, okay, okay, I understood, huh, is equal to some kind of constant of course, then x1 x2 x3 are in, I mean yeah it should be something like, अच्छा 1 upon x1 वगैरह क्या बोलोगे अपन, AP or something, no, I mean, you can always do this thing that an is equal to r power n, but then फिर इसका मतलब क्या होगा कि that r power n upon xn, that's yeah, so ये सारे जो terms is equal to some kind of constant, which is n upon xn सारी चीजें equal है, like n plus 1 upon xn plus 1 whatever, let's just say it's equal to k or something, तो फिर मतलब xn is equal to, let's say 1 upon k, who cares, so xn is equal to n times of k, yeah, so मतलब कि ये क्या AP में आ जाएगा, so A would be the answer, yeah, that's like assuming कि यहाँ पे A आने वाला है, then positive numbers in GP, अच्छा यहाँ पे तो A extra का आ गया, then what would you do, okay, फिर वो A पावर की वो अपने आप हो ही जाएगा ना, so no big deal, but no, एक ही तरीका है कि these go in AP, but what if they don't, तुमने बोला ये GP में, ओके, what if तुम्हारा कॉमन रेशियो जो है वो, अच्छा ठीक है, सो इनिशियल जो तुम्हारी टर्म है उसमें A डाल दो एक एक्स्ट्रा, सो AR पावर n and then so on, right? That happens, that's problematic because उसमें A पावर 1 upon x1 आएगा, and then because x1 AP में है, how is that going to make sense, हमें ये हमेशा नहीं होगा, बट ठीक है जब होगा तब होगा, then it's in AP, cool, next question, fifth, मतलब जब होगा तब AP में होगा, अदरवाइज नहीं होगा कुछ भी, प्रोग्रेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता तब। Okay, circles are drawn through the points such that the chord joining the 2 points subtend an angle of 45 degree at any point on the circumference. Okay, 2 points here, circles are drawn through that such that the chord joining the 2 points subtend an angle of 45 degree at any point on the circumference. Eh? Okay. Then the distance between the center is, okay, you should have told me. So ये तुम्हारा सर्कल है, ये तुम्हारा 2 पॉइंट्स है, और ये क्या सेपरेट कर, ओके सर्कल इज लाइक दिस एक्चुअली, और ये जो है ये 45 डिग्री सेपरेट कर रहा है, तो कि सेंटर पे 90 डिग्री सेपरेट करेगा, राइट? ओके, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा इसका फ्रॉम दिस पॉइंट, व्हाट इज दैट, या एंड यू जस्ट वांट व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, सो दो, ओके फाइन, से दो रहेंगे ना, सो ये एक डिस्टेंस रहेगा, सिमिलरली यहाँ पे एक सेंटर रहेगा, उसका डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, राइट? ओके, आई मीन स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, तो दिस, you know, yeah, this length is the same thing as this length, like yes, oh, and radius, okay, so square root of 2 times the radius of the circle, yeah, so I think D is the answer, square root 2 times the radius of either circle. Okay, next question, sixth, let A and B be positive numbers not equal to 1 and 3 pi power, okay, ठीक है, then okay, if A power 10 is bigger than B power 10 is bigger than 1, then which of the following is or are true, okay, is always true, always, okay, not equal to 1, AB not equal to 1, okay, और ये inequality है, if A power 10 is bigger than B power 10 is bigger than 1, interesting,
तो tan theta सेम ही है ना. हाँ, and then what is like tan theta? So 2 pi to 3 pi upon 2 पे मतलब तुम्हारा tan theta जो है वो it's negative. Okay, so tan theta is a negative number and these are positive numbers not equal to 1 and like a power, let's say negative x, so e power negative x is bigger than b power negative x. Interesting, it's bigger than 1. So like think about the function x नहीं k बोल देते इसको जो भी है. Think about the function x power negative k जहाँ पे k is a positive number. इसका जो डेरिवेटिव रहेगा it's like negative k x power negative k negative 1. x तो पॉजिटिव है तो ये like ये पूरी चीज पॉजिटिव हो जाएगी but then it's actually negative k over there, so ये डिक्रीजिंग है. So at 0 this was like infinity asymptotic और फिर ये डिक्रीज हो रहा है इस टाइप से, which means for this to happen a should be right. Okay, for this to happen reverse for the inequality because like a is less than b is less than 1. Okay, so that's always true because positive numbers. So b is the answer. Next question, 7th. Seventh is if the value of the integral this integral is alpha, then the value of this integral is, so 1 to 2 e power x squared dx is alpha. Acha. Another error function, seriously. Fine, value of this integral. So हाँ ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं अपन. Okay, natural log of x is right. So let's say x is equal to e power something, so it's, yeah, so like e power u बोल दो फिर e power x इसे replace कर डालो whatever. Then it's from 1 to 4 square root of x basically, and then यहाँ पे e power x dx बाहर आ जाएगा, right? फिर you would like, okay, sort of x is like, हाँ I understood. So x squared थी ना अपने को इसमें, right? Whatever, we can write it like this thing. Okay, this probably won't work. You don't want that to be happening. I mean you could have replaced by e power x square actually, that would have also worked. तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? So x को replace करो e power x square से, then it's like integration from 1 to 2 of, so यहाँ पे just x आ जाएगा because yeah, just x होगा square root of, okay, and then dx will be like e power x square times 2x dx, right? इसे replace हो जाएगा, which means integration from 1 to 2 of 2x square e power x square dx, that is what this will be, right? So this is our I value. अब क्या differentiation by parts, integration by parts, sorry. So I don't like this. I definitely don't like this. Okay, you can split this as 2x times x times 2x equal, इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट जस्ट इसको इंटीग्रेट किया e पावर x स्क्वायर आ जाएगा बस. तो या e पावर x स्क्वायर आ जाएगा, just x e पावर x स्क्वायर माइनस, well, integration of e power x square. It's going from what to what, just 1 to 2 and it's like 1 to 2 dx. Sorry, this is just the integral that they gave us, it's alpha. और ये चीज क्या है, 2 e power 4 minus e, just e, and then minus alpha. So 2 e power 4 minus e minus alpha, which is e. Next question, 8th. 8 is, okay, the wrong question. The range of the function 8, GM. 9th. The range of the function f defined as f of x is equal to 6 minus x e x minus 2 is. इसकी range 6 minus x p x minus 2. Okay. Wait, what? Seriously? इसकी range? Okay, first of all, these should be integers, otherwise it मतलब sense ही नहीं बनता. So x is bigger than or equal to, or like integer thing, positive integers, which means like x is actually strictly big. Zero चलता है क्या? So like NPR कैसा होता है? N factorial upon n minus r factorial basically, right? तो n minus 0 factorial भी चल जाएगा, no big deal. So zero भी चलता है. So x bigger than or equal to 2 and for ये चीज तो zero नहीं हो सकती, and moreover it's not just zero नहीं हो सकती, इससे बड़ा चाहिए अपने को. 6 minus x should be bigger than or equal to x minus 2. Not exactly equal, okay, equal भी चल जाएगा, no big deal. So x minus 2 से बड़ा, which means that 2x is less than or equal to 8, so x is less than or equal to 4. So क्या होता है इसमें, 2 3 4 अपन डाल के देख सकते हैं. Try to put that in, देखते क्या होता है. 2 डालो इसमें, so 4p, क्या 4p 0, which is like 1,
फिर 4 नहीं सॉरी इसमें चाहिए 3p1 राइट बिकॉज या सो वो कितना हो जाएगा 3p1 इज it's like 3 factorial upon 2 factorial just 3 okay फिर चाहिए अपने को 2p2 which is just 2 factorial because 2 factorial upon 0 factorial so 2 sorry okay so इसमें क्या 1 2 3 is a set which is the next question 10th 10th is two equilateral triangles constructed from a line segment of length L and M and M are the maximum and minimum value of the sum of the area of the two plane figures. To the triangles from the line segment of length L, M and M are the maximum and minimum value of the sum of the areas of the two plane figures. What? What do you mean by that? दो कैसे अच्छा समझा it's like this actually isn't that right अच्छा and these are the sum of the areas of the अच्छा ठीक है then n is equal to 2 है okay जो भी है so mean just say this thing is x and this will be like l minus x जो भी है yeah or just say l times of minus x काटा okay who cares really so area कैसे चलेगा so 3/4 of x square plus l minus x का square obviously ये अच्छा yes this is the thing okay what do you want first of all then so अपने को maximum value चाहिए इसकी maximum value will be when x is equal to 0 or equal to l so capital M is just equal to square root 3/4 यहाँ पे जाएगा l squared and the minimum value is when x is equal to l upon 2 because you know the thing so हाँ मतलब that is the thing so just square root 3/4 यहाँ पे चाहिए l squared upon 4 plus l squared upon 4 which is like l squared upon 2 so yeah square 3/4 times l squared upon 2 so क्या चाहिए अपने को हाँ ठीक है in that case m is equal to 2 times of small m so A is the answer next question 11th 11th is if 4 points PQRS are in the plane okay be taken and the square of the length of tangents from P to the circles on QR as diameter be denoted 4 points plane पे square of the length of tangents from P to circle on QR okay QR एक diameter है circle का okay P से तुम tangent create कर रहे हो on QR जो लेंथ है टेंजेंट की वो तुमने निकाली है ओके इसको तुम डिनोट कर रहे हो एज पी क्यू आर राइट ओके अपने को ऐसा एक्सप्रेशन गॉड सीरियसली ओके तो इसका एस कैसा रहेगा एक्स माइनस एक्स क्यू जैसे ये जो है इसको अपन x1 एक्स नॉट वाई नॉट बोल देते हैं इसको अपन बोल देंगे x1 y1 x2 वट एवर सो जो अपनी s वैल्यू रहेगी जस्ट इक्वल टू दिस थिंग x माइनस x1 का that times of x minus x2 plus y minus हाँ you know the thing so plus y को तुम कर लोगे and that is equal to s which is just equal to what t square minus r square just इसे put करो x is equal to x naught y naught तुम्हें tangent का square मिल जाएगा so basically ये जो चीज है just equal to square root of x naught minus x1 times x naught minus x2 वो you get the thing which is like square root of what x naught square plus x1 x2 minus this is very weird minus x1 x naught minus x 2x naught of the yeah just keep on going whatever this will be the thing अपने करना क्या है then oh god PRS minus PQS plus P okay QRP okay ये सब अपने करना है right isn't there some easier way to do this thing okay this is just really bad someone think about it फिर तुम RS ले रहे हो and then फिर तुम P ले रहे हो इसका मतलब QS P ले रहे हो अच्छा सारे ऑप्शन एक बार देख लेते हैं सो दोनों इसमें P रहेंगे स्टार्ट में फिर दोनों इसमें Q रहेंगे राइट ये हर इसमें हो रहा है ओके अच्छा नहीं यहाँ पे भी हो रहा है फिर P और Q तुम कंबाइन कर सकते हो लाइक RS माइनस QS दो इसके तुम्हें but it's the length of tangent not the square so yeah that's kind of problematic that is kind of problematic अब अपन क्या करेंगे so it's that
Oh god. Oh god, now what? Um, yeah, can you do anything like that? Okay, I have no idea. Difference of timings. I don't know यार ये बहुत अजीब हो रहा है. Hmm. Anything interesting you know about it? तो sum रहेगा. Can't you just like इसका x1 x2 जो है वो रूट्स है. तो इसमें x नॉट पुट कर रहे हो. ओके. और फिर क्या? अच्छा तुमने आर एस में पुट किया, तुमने p पुट किया पहले, फिर तुमने q पुट किया, तुमने दो चीजें पुट की. या और फिर तुमने उसे क्या किया, उनको स्क्वायर रूट करके ऐड किया. दिस इज जस्ट रियली 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 वियर्ड. एंड इट वाज समथिंग लाइक दैट. This is starting to not make sense. But if I know just special cases नहीं करना चाहिए, but what if अगर मैं just special cases कर लेता हूँ? Oh, okay, the square of the, I should have seen that. Square of the length of it. अच्छा ठीक है, so our s value is the thing. So this is actually, yeah, this is in fact PQR, right? So yeah, that's the thing. So ये क्या हो जाएगा? We can write it like, yeah, this can be done as what? X naught squared. हाँ, ठीक है, करना ही पड़ेगा. तो like minus x1 x naught minus x2 x naught. अपन सिर्फ x का देख रहे हैं अभी, अपन y का भूल जाओ, ठीक है. प्लस x1 x2 और फिर जो भी आगे का रहेगा, अभी डोंट केयर अबाउट दैट. या दैट इज थिंग. राइट, और फिर अपने को सम करना पड़ेगा और समथिंग. सो फर्स्ट तुम क्या कर रहे हो? अच्छा p तुमने यहाँ पे किया x1 x2, और फिर जैसे लाइक x3 x4 तुमने यूज किया, बिकॉज इसमें इसमें r और s है, इसमें भी r और s है, इसमें भी. ओह. ओह, तो s तो हर इसमें रह ही रहा है. इसमें r और q है, इसमें इसमें भी s है, इसमें भी s है, इसमें भी हर जगह पे है ना. यस. स्पीक की तरफ में s आ ही रहा है हर जगह पे. कूल. तो एटलीस्ट एक चीज तो सेम रहेगी. लाइक तुम्हें सिर्फ r और q जो है उनके लिए अलग करना पड़ेगा. ओके. सो जैसे s का x3 समथिंग है, सो अपने को क्या करना पड़ेगा? x नॉट स्क्वायर्ड माइनस x1 x नॉट माइनस x3 x नॉट प्लस x1 x3, और फिर दूसरा वाला रहेगा, इसमें सब्ट्रैक्शन आएगा. सब्ट्रैक्ट x नॉट स्क्वायर माइनस x2 x नॉट माइनस x3 x नॉट. ये तो मर जाएगा हर जगह पे. प्लस x, तो ये 3 चाहिए, x2 x3. सब्ट्रैक्ट करो, ये तो गया, ये भी गया. तो क्या क्या बचा तुम्हारे पास में? जस्ट x2 माइनस x नॉट टाइम्स x नॉट, और फिर यहाँ पे आ जाएगा x प्लस, हाँ, तो फिर x नॉट माइनस x3. तो जो सब्ट्रैक्शन होगा, यू जस्ट गेट दिस थिंग, राइट. ओके. इसको मैं अच्छी तरह से लिखूँ तो फिर जस्ट लाइक एक्स आर. अच्छा ये क्या है? पी और क्यू के लिए, राइट. तो एक्स आर माइनस जो पॉजिटिव वाला था, दैट इज रिलेटेड विथ दिस थिंग. फाइन. एक्स आर नहीं, वो तो फिर क्यू होगा ना इसमें. एक्स ओके, एक्स क्यू माइनस एक्स आर टाइम्स एक्स पी माइनस एक्स, व्हाट इज दिस थिंग? x3 है. व्हाट इज x3? s ऑफ कोर्स. दिस इज इक्वल, हाँ, तो फिर प्लस वो y के लिए रहेगा, समेशन करता इसमें हर कोऑर्डिनेट के लिए. एंड दिस वुड बी this thing pq, yeah, wait, prs minus pqs. ओके, इंटरेस्टिंग. तो ओके, वो तो अपने को समझ गया. दोनों में सेम आ रहा है. इसमें क्या है? prs एंड देन से प्लस आ रहा है. ओके, दिस डजंट मेक सेंस. b इज जस्ट वेरी स्टूपिड बिकॉज वो स्क्वायर्स ऑफ लेंथ है, तो फिर या ओके. और इसमें एक माइनस 3 आ रहे हैं फॉर सम रीजन. आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट. इट्स दिस थिंग. ओके. सो ये तो मुझे अजीब लग रहा है. 1 क्यू arbitrarily 1. I don't think this is, so probably A correct होगा anyway. So P R S minus P Q S अपने को मिल गया. फिर अपने को करना है Q P R. So Q P R मतलब कि X P की जगह पे अपने को X Q डालना पड़ेगा. ओके. फिर R की जगह पे आ रहा है P. दिस इज X P ओवर देयर.
फिर उसके बाद में आ रहा है, अच्छा यहाँ पे P है और यहाँ, अच्छा R दोनों, फाइन फाइन फाइन। फिर यहाँ पे S आएगा इंस्टेड ऑफ, राइट, सो इंस्टेड ऑफ Q यहाँ पे S हो जाएगा, क्योंकि एक्स एस माइनस एक्स पी, बिकॉज तो या, और फिर जो बचा हुआ रहेगा एक्स या एस यहाँ पे अपन यहाँ पे R डालते हैं, दिस थिंग, तो इनका सम बेसिकली। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे तो बस उल्टा हो रहा है, ओह ऑफ कोर्स, वेट, ओह एस यहाँ पे अपन डाल रहे, not P, it's R, it's supposed to be R instead of S. ओके, हाँ फिर ये सही है ना। सो लुक एट दिस, ये तो सेम है बट ये अपोजिट से, तो ऐड होके जीरो हो जाएगा, सो ए इज इन फैक्ट करेक्ट। वेरी इंटरेस्टिंग, पर इसका कोई यूजफुल एप्लीकेशन तो है नहीं, तो मैंने क्यों किया। नेक्स्ट, मैं बस इसको नॉर्मली दे सकता था, स्पेशल केस लेके। ट्वेल्थ, twelfth is the area bound by the straight line x equal to -1 and x equal to 1 and the graphs of f of x and g of x where f is equal to x cube and g of x is this thing। अच्छा, x equal to -1, हाँ जोड़िए, x cube and जोड़िए, x cube is like this probably, which is f, और क्या है, g of x is x power 5 if second unit बड़ा होगा, so like this is faster, okay, just more like this, तो 1 पे तो यही कुछ जाएगा। okay, so जब x is between 0 and -1, oh that's interesting, अच्छा -1 पे इक्वल हो रहा है, राइट, ओके, उसके बाद नहीं ऐसा ऑड फंक्शंस, आई नो कैसे ग्राफ करते हैं इसको, दिस इज x पावर 5 और समथिंग, सो एट -1 टू बी इक्वल, और x व्हेन, या ओके इट्स लाइक दिस थिंग, सिमिलरली ये 1 पे इक्वल हो जाएगा, अच्छी फिगर नहीं ड्रॉ की बट व्हाटएवर। ओके, सो तो चाहिए एरिया बिटवीन दीज, सो ये राइट इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज दिस थिंग, इट्स x पावर 5 minus x cube from -1 to 0 plus integration from 0 to 1 of x minus x cube, अरे क्या हो रहा है यार, okay, x minus x cube, okay, that should be cool, so करो इसका integrate, x power 6 upon 6 or something, well yeah, 0 minus minus 1 number यहाँ पे हो जाएगा -1, right, so -1 upon 6, इसमें यहाँ पे 4 आएगा but then it is positive, so 1 upon 4, and then फिर इसके लिए क्या होगा, instead of 1 to make 1 upon 2 minus 4 upon 4 I guess, which is just this 1 upon 4, whatever, ये तो मार गया, just this thing, so 1 upon 2 minus, yeah, which is 3 upon, so 2 upon 6, 1 upon 3, 1 upon 3 is the answer. So yeah, that's the area, 1 upon 3, which is A. Next question, 13th. हाँ ठीक है, charging seriously. 13th, the least value of the sum of squares of the roots of equation, this equation is a minus 2, इसमें ठीक है, इसको 1000 बार देखा ना, well yeah, so क्या है ये, it's like a plus 1 but that times of -1 or something, and then यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, a minus 2 चाहिए तुम्हें, तो तुम्हारा जो सम है that should be a minus 2 and तुम्हारा जो multiplication is, wait, it's not expected at all, अगर यहाँ पे +1 होता that would have made sense, but ये तो अजीब है, अच्छा ये तो बड़ा अजीब है यार, ठीक है इसको नॉर्मली करो, what do you want the least value of the sum of squares, sum of squares मतलब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, which is like a plus 2 का -2 का स्क्वायर, फिर -2 alpha beta, so -2 times of, yeah, just negative of it, like 2 times of alpha plus, so a plus 1, yeah, it is a minus 2 equal to u, so it's like u power 2 plus 2 times of u plus 2 plus, okay, u plus 3 I guess, so u squared plus 2u plus what, 6, see, yeah, like u plus 1 ka square plus what is this thing, plus 5, right, so yeah, it's the max, it's the least value, which is 5 of course, so B is the answer. Next question, 14th, so 14th is, if f of theta is equal to this thing, then the value of f of 11 degree times f of 34 degrees, so 11 or 34 is fine, so oh it's just really bad actually,
You can still try it out. Who cares, right? Sine theta. Okay, interesting. Can you like use it in some other way? You can definitely try like okay ये तुम टू साइंस करोगे वो कर सकते हो but why do it? नॉर्मली करके देखते हैं ना क्या हो जाएगा 1 - sin of 20। अच्छा तो टू थीटा की बात करते हैं 22 एंड यहाँ पे आ जाएगा 68। अच्छा वो कॉम्प्लीमेंट्री है राइट सो दो कॉम्प्लीमेंट्री तुमने ऐड कर दिए देन तुमने साइन टू थीटा कम तक अल्फा बोल दो सो या थीटा 11 डिग्री है तो अल्फा आ जाएगा उसको साइन ऑफ अल्फा पॉइंट टू कोसाइन ऑफ अल्फा बट दूसरा वाला जो रहेगा दैट्स लाइक 1 - कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा अपॉन टू साइन ऑफ अल्फा बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री राइट ओके दिस इज ये कंबाइन होके जस्ट टू साइन ऑफ टू अल्फा का डालो एंड देन ये जो रहेगा yeah it's like 1 squared minus that so just negative right so sine minus cosine का square is like sine squared plus cosine squared minus 2 sine cosine and then you just have -1 or something so ये तो गया just this thing so here 2 sine cosine upon 2 sine of 2 alpha yeah like sine of 2 alpha upon 2 sine of 2 alpha मतलब basically 1 upon 2 so this will be a next question I mean could have just put any complementary thing right yeah 0 or 90 degree okay then वो काम नहीं करेगा because यहाँ पे cosine होता है whatever next question so 15th a variable triangle ABC is circumscribed about a fixed circle of unit radius side BC always touches the circle at fixed point D. Okay, variable triangle about a fixed circle of unit radius. उसके बाद उसको subtract किया. Side. What do you mean about or something? Okay. अच्छा touches the circle. हाँ समझा. So ये अपना circle है. तुमने यहाँ पे ऐसे triangle draw किया. Understood. और फिर क्या करना आपने को? Side BC always touches the circle at fixed point D. So this is D and this is at D. Always at fixed point. Oh, interesting. और ये unit radius का है. Okay. If B and C vary in such a way that BD times DC is equal to 2. So BD times DC is equal to 2. Okay. Then the locus of the vertex A will lie on straight line something. Okay. So ये जो रहेगा. Fine. Of course इसको हम अपन origin मान सकते हैं. Right. So this is our origin. ये जो तुम्हारा point रहेगा. This is let's just say it's like -1. Sorry. It's like U comma -1. And this point will be यार ये अजीब है ना it is weird okay और क्या मल्टीप्लिकेशन क्या तुम्हारा 2 आ जाएगा so b जो है that is this thing -2 upon u comma because नेगेटिव है so comma -1 तो अपने दो पॉइंट्स मिल गए what do you want just want where will a be तो उसका जो yeah okay this is not going good but जो भी है the slopes should be such that it actually touches the thing wow I mean, it should be perpendicular to that, right? Okay, वो तो है ही, but then its distance should be also just 1. Come on, think about it. It's like on a straight line. हाँ करना ही पड़ेगा. So x comma y बोल दो. So you want this distance to be 1 and this distance to be 1 as well, right? तुम distance कैसे ढूंढोगे वैसे? It's like that 0, 0 तुम्हें ये point पता है तुम्हें ये point पता है. Just want this distance. That's weird. Sure, if you want a vector or something, but that's not gonna help you. Yeah, that won't help you. How is that going to help you? It won't. तुम इसका वेक्टर भी ढूंढ लोगे बढ़िया तुम और क्या कर सकते हो तुम ये वेक्टर ढूंढ सकते हो यस ये वेक्टर पता है हैव टू टेक दिस थिंग ओके ओके अंडरस्टूड सो क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह बहुत लंबा जाने वाला है बट व्हाटएवर यू हैव टू डू इट सो ये वेक्टर क्या रहेगा इट इज x +2 अपॉन इसको भी v बोल दो यार इसको भी v बोल देते हैं देन व्हाट यू हैव जस्ट यू हैव uv इक्वल टू -2 ओके सो x +2 अपॉन सॉरी x - v और इसके पहले अपन ये करते हैं एक्स - u ओके कॉमा y+1 ये अपना वेक्टर है गोइंग फ्रॉम देयर टू देयर ओके फिर गोइंग फ्रॉम देयर टू देयर अपना वेक्टर कितना होगा दैट वेक्टर इज जस्ट आई मीन वैसा की जाना है ऐसे जाओ ना इनफैक्ट सो जस्ट u -1 दैट्स दिस वेक्टर अपने को लेना है
ये क्रॉस प्रोडक्ट बट अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, राइट? Well, not just the cross product, we want the cross product, the unit vector of this thing. Okay, so like, what do you want? Suppose ये तुम्हारा vector v है, हमारा vector a है. You want the cross product like v vector cross a vector, उसका magnitude actually with a hat, magnitude of this thing, right? It's like v vector cross a vector upon a का magnitude. So magnitude of a, that's the magnitude. Uh, it's not that hard, but still, I don't want this particular. इसमें k की वैल्यू तो 0 है. We know it is in completely k hat direction, but whatever. Still have to do it. हाँ तो डॉट प्रोडक्ट. हाँ, you get the thing. याद आ रहा है कुछ? या मुझे तो याद आ रहा है. स्क्वायर रूट पहले क्या दोनों x वाले अरेंज कर देते हैं एंड देन फिर दोनों y वाले अरेंज कर देंगे, राइट? यस. सो x में क्या है, लाइक x माइनस u एंड हर बाकी हर जगह पे k जो आएगा वो मतलब z hat वाले कंपोनेंट्स वो तो 0 हो गए ना, which is this thing that you have to worry about. Then it is in fact this just square root or square वो सब भूल जाओ. It's just this thing x minus u times negative 1 minus u times y plus 1 इसका mod. So that's like x minus u plus uy. Well, that's u, right? Yeah, that is the thing. Plus u तो ये तो मर गया. It is this thing. So like x plus uy. Cool. Mod g इसका but whatever. And then this thing upon this guys like square root of तो कौन सा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट? ओके, x is equal to 1, right? Which means square वगैरह हाँ ठीक है, like x squared plus u squared y squared plus 2uxy is equal to a square, which is like sort of just x minus u का square plus y plus 1 का square is like y squared plus 2y plus 1. That's correct. So ये तो गया. और कुछ 2uxy तो नहीं आया यहाँ पे अभी तक. This is very weird. Anyways, तो मतलब क्या हो जाएगा 2uxy plus 2ux is equal to y squared plus यहाँ पे प्लस 1 चाहिए था ना, हाँ वो है अभी भी आ रहा है. So that's like 2y plus 1. Okay, और यहाँ पे माइनस u squared भी आ रहा है, so minus u squared plus this thing. Okay, not going good, not going good. और अच्छे से लिख सकते हैं इसको hopefully. हाँ इसमें से 2ux बाहर निकालो. It's like this thing minus u squared plus 2ux. So y plus 1 को क्या y dash पे दो. So just y dash is equal to y dash square. That's better, right? So y dash squared minus 2ux y dash plus u squared equal to 0. That is the thing. अच्छा ये तो बहुत ही बुरा हो गया. It's not looking like a line anymore. This should happen at the same time. This should happen. Y dash squared minus 2vxy plus v squared is equal to 0. And then you know like u times v is equal to negative 2, right? Okay. Hey, I know it's like u and v are the roots of this equation in u basically, right? So when comes to product of roots, that's equal to negative 2. That means y dash का square is equal to negative 2. That doesn't make any sense. No, something's wrong about this. ये तो पॉजिटिव मैथ है ना, सो ये कैसे हो गया? That should have been y dash square, of course. I mean, how did this happen? Think क्या x minus u का स्क्वायर ठीक है ना, वो तो अपन ने किया ना, लाइक जस्ट वांट कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें. So that's y dash square. Okay, ये x square मर गया हर जगह पे, ये 2ux यहाँ पे गया. It's like yeah, so यहाँ पे फिर y dash आ गया, right? So it's this thing u squared y squared. I think मैं ये भूल गया गलती से. Yeah, that makes a lot of sense. So plus you know 2ux y dash is equal to u squared plus y dash squared actually. So ये u square उधर बेच like u square times y minus 1 y plus 1 y plus 1 is y dash, so y dash times y minus 1 plus 2ux y dash is equal to y dash square. Either you could just have y dash equal to 0 or
ये दोनों u और v दोनों के होने वाला by the way. Or you could have this thing u square times y minus 1 plus 2ux is equal to y dash. So we can have y plus 1 basically. Okay, interesting. So it's like this thing u square times y minus 1 plus 2ux minus y plus 1 is equal to 0. Or फिर similarly v square and then once again like v times u equal to negative 2. तो इसका मतलब हुआ कि yeah, like negative of y plus 1 upon y minus 1, this thing is actually equal to negative 2 because product of roots. So yeah, मतलब ये ऐसा हो जाएगा. So like y plus 1 is equal to 2y minus 2. So y is equal to 3. Either y equal to 3 or y is equal to negative 1. ये या फिर ये ऐसा होना चाहिए. Y equal to negative मतलब कि यहाँ पे आके वो तो मतलब अजीब है. So just that cannot happen, which means y equal to 3 is the thing. So yeah, y equal to 3, which is this, yeah, this thing. So it's 4 units above this line. Interesting. इसमें करना क्या था? So it's parallel to side BC, I believe. Yes. Okay, perpendicular to side BC. Okay. So A is the answer. Okay, अब मैं समझ रहा हूँ थोड़ा बहुत कि लास्ट टाइम अपन ने क्या क्या सही से नहीं किया होगा. ज्यादा मुझे याद है लास्ट टाइम जो बहुत डिफिकल्ट गया था. Okay, so this is in fact parallel to BC, which is A. Next, 16th. 16th is a groove is in the form of a broken line ABC and the position vectors of these 3 points are respectively this. So A क्या है अपना 2, negative 3, 2. 2, negative 3, 2. B is 3, 2, negative 1. C is 1, 1, 1. And क्या बोल रहे हैं ये ABC is like broken lines, मतलब दो lines basically. Okay, ये ABC है. A force of magnitude something acts on a particle of unit mass kept on a point A and moves it along the groove at point. Sorry. Force of magnitude something. Okay, line of action of the force is parallel to the vector. This vector. Square of 3 कैसे आ गया? इसका magnitude is square root of like 1 plus 4 plus 1, which is sort of 6. Is that right? Sort of. Yeah, मतलब अपन कर भी सकते 24 square root of 3 upon square root of 1 plus 4 plus 1, like sort of 6. And that is of this thing, 1, 2, 1. It's our force. So मतलब, 12 square root of 2 times ये चीज. Okay, that's the force, right? All along the number of units of work. Okay, all along. Okay, number of units of work. And come on, seriously, just find the total displacement and that times of this force. Total displacement कितनी है? A to C जाने वाली. It's just negative 1, 4, and negative 1. So dot with this thing. So 12 square root of 2 times minus 1 plus 8 minus 1, I think, which is 6. So it's just 6, and then what was it? 72 square root of 2, right? Which is the next question. Easy, huh? 17th. 17th is equation of one of the lines that pass through 10 comma negative 1 and are normal to x square equal to 4 times of y plus 2 is pass through negative, okay, whatever, x square equal to 4 times of ठीक है ना. So अगर y square equal to 4x है then my नॉर्मल चाहिए ना अपने को. सो जब ये रहता है तब तुम क्या करते हो? नॉर्मल के लिए जस्ट y टाइम्स y इज इक्वल टू नेगेटिव mx प्लस 2am, यानी कि लाइक 2m प्लस क्या था 280 प्लस 80 क्यूब्ड, राइट? वेट नो, x इक्वल टू y इक्वल टू नेगेटिव tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब. या ऑफ कोर्स 80 क्यूब्ड. व्हाट एल्स? 80 क्यूब था ना कि 80 स्क्वायर? नो, इट कांट बी 80 स्क्वायर. doesn't make any sense. It यार ये कैसे हो रहा है? मैं ये सब कैसे भूल सकता हूँ? y equal to negative tx plus 280 plus 80 cubed. Yeah, that's the thing. That's how I've always done that. So हाँ 80 क्यूब मतलब कि यहाँ पे m क्यूब आएगा क्या? So a कितना है 1, just t क्यूब मतलब कि m क्यूब in this case. Negative m whatever. Okay, I guess negative m नहीं होना चाहिए. यहाँ पे negative का डालते हैं because slope, right?
ओके दैट वुड बी द थिंग। सो ये अपना नॉर्मल हो जाएगा अगर y इक्वल टू 4x है तो। पर इस केस में क्या है, इस केस में y को रिप्लेस करो x से, सो x इज इक्वल टू m, और x को रिप्लेस करो y प्लस 2 से, सो y प्लस 2 माइनस 2m माइनस m क्यूब। अब m के जगह पे t यूज करते हैं बिकॉज ये अजीब हो रहा है, it's like m would be dx upon dy which doesn't make any sense, so just use t instead, right? हो गया। नेगेटिव चाहिए अपनी, it's like नेगेटिव t, जो भी है जो भी है जो भी है, it just x is equal to नेगेटिव टी वाई, नेगेटिव टू टी, ओके तो मर गया, जस्ट प्लस टी क्यूब, सो एक्स प्लस टी वाई इज इक्वल टू टी क्यूब, इस टाइप का चाहिए अपने को, दिस इज अवर लाइन एंड passes through this thing, just figure out a t value, so 10 negative t is equal to this t cubed, okay, just that, huh? Like t cubed plus t is equal to, okay, negative 10, oh god, another depressed cubic, I don't want to be doing this, इसका कोई obvious solution है क्या? So like t equal to 2, हाँ t equal to 2 is an obvious solution, so t plus 2, sorry t minus 2 इसमें से बाहर निकालने की कोशिश करें, t minus 2 divide t cube plus t minus 10, so पहले से चाहिए t squared, like used on t cube minus 2t squared, subtract करो just 2t squared plus t, then you just need plus 2t, so 2t squared minus 4t subtract just 5t, 5t minus 10 मतलब क्या plus 5, so either t equal to 2 or ये जीरो चाहिए, फिर doesn't make sense, so like t equal to 2, sorry, not 0, so t equal to 2 is the solution for this thing, which means yeah, okay, so वो जो line x, so उसका अपने को मतलब t मिल गया ना, just x plus 2y is equal to 8, that is our line, which is D. Next question, 18th. 18th is n different books and bigger than or equal to 3 are put on random in a shelf. Among these books, there is a particular book A and a particular book B. The probability that there are exactly R books between A and B is n books put in a shelf. Among these books, there is a particular book A and a particular book B. The probability that there are exactly R books between A and B. टोटल n बुक्स है, दो रैंडम बुक्स जो है वो तुम उसकी बात कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी है कि उन दो बुक के बीच में एग्जैक्टली आर बुक्स है, राइट, एग्जैक्टली आर बुक्स, वो दिस कैन बी चैलेंजिंग, इट्स नॉट एक्चुअली दैट बैड, सो राइट जो पूरा है इट कंटेन्स एन, यहाँ पे तुम्हारा ए और बी बुक्स होगी, इनके बीच में चाहिए एग्जैक्टली आर बुक्स, तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, इट्स लाइक आर प्लस 2 तो बुक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, इट्स जस्ट या समझा, सो राइट, तो बचे हुए कितने बुक्स है, एन माइनस लाइक आर प्लस 2, एन माइनस आर माइनस 2, राइट, इतने बचे हुए बुक्स है, तो तुम इसको पार्टीशन करोगे दो सेट्स में, लाइक वेट, और जो अपने एंड व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली आर बुक्स बिटवीन ए एंड बी, और ये जो बुक्स है इनकी कोई आइडेंटिटी मैटर करती है क्या, नॉट रियली, एनी ऑर्डर में उनको अरेंज करो दैट डजंट एक्चुअली मैटर, राइट, बिकॉज कट नहीं वाले प्रोबेबिलिटीज में, व्हाट द प्रोबेबिलिटीज, सो या ये करेंगे कितने तरीके होंगे, डिस्ट्रीब्यूट दीज, it's like n minus r minus 2, okay, over here we can change that as well and whatnot, but वो सब भी count कर ही रहा है पर directly, all right, है ना, तो सारी की सारी चीजें सेम हो सकती है, whatever, तो ये जो चीज है इसमें को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन टू राइट वेज, सो लाइक हाँ ठीक है, तो फिर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स लाइक n minus r minus 2 because order doesn't matter at all, so like n minus factorial upon more like the sum of these guys actually. So sum of n minus r minus 2 ci summation from I is equal to 1. So यहाँ पे I books से suppose, so I to you could actually not 1, 0 भी चलेगा ना, या 0 भी चलेगा. So from 0 to all the way till n minus r minus 2, जब सारे सारे books यहाँ पे आ जाएंगे, right? So yeah, sum is just equal to 2 power this thing, so 2 power n minus r minus 2. तब तक चाहिए ये चीज, ओके, it's getting weird. Exactly r books between a and b, it's this probability. अच्छा इतने तरीके हैं, and then divide by the total number of ways that you can do this thing. number of ways की तुम इनको अरेंज कर सकते हो,
राइट। ओके तो बहुत अजीब हो जाएगा। फिर तुम आर को वेरी करोगे, राइट? सो आर इक्वल टू जीरो से लेके आर इक्वल टू, ओ माय गॉड, इट्स नॉट गोइंग गुड, हाँ? So you will like have r equal to 0 for r equal to 1, and then there's some easier way for this thing. Random. So I just it's getting weird, isn't it? Yeah. Okay, ये मुझे समझा कैसे हुआ। और जब अपन इसकी बात कर रहे हैं then it's like हाँ, तुम बस उसको दो चीजें चूज कर रहे हो तुम इन एन इसमें से, और फिर that's the thing, right? You just have to choose two seats, right? So NC2, और ये मैच नहीं कर रहा है for some reason. I mean, they should have matched, of course. Uh, like 2 power, yeah, that does make sense, but फिर ये क्यों नहीं काम कर रहा है? It doesn't look like that. You could have just summed this up, well, that would have made sense as well. But NC2 is a thing, right? It's number of ways कि तुम इसको arrange कर सकते हो A and B and it's as if like A और B colored books और ये सारे black books है, ऐसा ऐसा सोच लो ना। तो 2 power n minus 2 is, yeah, that is number of ways to do this thing. Okay, arrangements, the shape, और फिर ये NC2, cool, that is the thing. So इसमें फिर क्यों नहीं आ रहा है? सारे को मैंने तरीके देख लिए कि वो अरेंज किए हो, just 2 power n minus 1. इसमें क्यों नहीं है 2 पावर? शुड बी देयर। मे बी ये टाइपो है यहाँ पे। या दिस शुड बी अ, ओह ओके, दिस इज एक्चुअली अ टाइपो। समझा। अदरवाइज तो कैसे होगा? ऑफ कोर्स तुम सोच रही हो ना, तुम्हारी बुक या तो यहाँ पे जाएगी या फिर यहाँ पे जाएगी, तो 2 चॉइसेस। और फिर कितने बुक्स तुम्हारे बचे गए? n minus r minus 2, so it is the thing. So यहाँ पे जाएगा n times of n minus 1 upon 2 पर भेज दो, so just minus 1 हो जाएगा ना, right? So it's like 2 power n minus r minus 2 upon n times n minus 1, so it should be c, but यहाँ पे टाइप है। समझा कि ये एक्चुअली में 2 पावर चाहिए था, बट वो ठीक है। नेक्स्ट 19th is let any be two fixed points in P, another point in the plane moves in such a way that K1 PA plus K2 PB is equal to K3, where K1, K2, K3 are real constants. Which of the following is a locus of P? अच्छा, so wait, what is this thing? A और B दो fixed points है, P कोई random point अच्छे से move कर रहा है, so that this happens K1 PA plus K2 PA equal to K3, right? Okay, which of the following is a locus of P? Circle if K1 is equal. अच्छा, okay, okay. Yeah, I've seen that somewhere. So जब K1 equal to K2 is bigger than 0 हो जाएगा, then it's an ellipse. I understand that. K3 bigger than 0, right? A circle if K1 is bigger than 0. Wait, what? No, 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 no. That is wrong. I don't like the. Okay, that's wrong as well because K1 तुम्हारा vary हो रहा है. Circle if K1 is equal to 0 and K2 times K3 and K3 both are bigger than 0. K1 bigger than, okay, K1 equal to 0. मैं कोई भी एक ने 0 put कर दिया, then that just means like, oh yeah, it is in fact a circle. Yeah, this A looks correct. A can be the thing. K1 0 है, then K2 bigger than 0 हो गए, then it is in fact a circle. K3 bigger than 0. Yeah, then it's an ellipse. So A is correct, C is correct. Circle if K1 bigger than 0, K2 less than 0. No, okay, यही पे disqualify हो गया. K3 equal to, okay, तो कुछ हो जाए. It's like it will be a line or something, right? Wait, no. K1 bigger than 0, K2 less than 0. अच्छा, so it's like K1 PA is equal to mod K2 PB, right? Oh, it's the Apollonius circle thing, right? Yeah. So yes, in fact, it is correct. So actually, which of the following is is locus of P? So yes, actually B is correct. C is also correct.
A is correct. But फिर oh god ये तो अजीब हो रहा है. K2 equal to -1 and then K1 K3 becomes okay ये अजीब है. This doesn't make any sense. So A B C तीनों के तीनों ये कैसे हुआ? Because इस पे सिंगल करेक्ट चाहिए ना अपने को. 19 का A B C. I mean हाँ because ये अपोलोनियस सर्कल हो जाएगा, right? ये तो है ही सर्कल अपने को दिख रहा है. Because K1 equal to 0 हो गया. So like of course PB से तुम्हारा कांस्टेंट. Yeah. Okay. और ये भी हाँ इलिप्स है. I know that. Okay 20 next question. But ये कैसे हुआ? Because सिंगल करेक्ट था ना ये तो. The following is locus. I think it should be which of the following is not a locus, possible locus of P. Then that would be D. Anyway, 20. If A and B are square matrices such that P is equal to negative A inverse of BA, then I think I've seen that somewhere. Anyway, A plus B squared is equal to AB plus BA. Oh god, yes sir. Seriously. Okay, काम करो A inverse दोनों जगह पे like it's basically AB is equal to BA. Basically ऐसा बोलोगे ना. So, हाँ. A plus B square का चेक है. It's like A squared plus AB plus BA plus B squared or something. Okay, that's very good. Can you somehow use this fact? What if I apply B? So ये हो जाएगा BAB that's equal to B squared A. But then BA is just AB. तो फिर ये हो जाएगा like यहाँ पे AB डाल दो. Just AB squared is equal to B squared A. Okay, very interesting. I want to eliminate A somehow. But कैसे? चलिए तो अपन रिपीट कर सकते हैं लाइक ए पी पावर एन इज इक्वल टू पी पावर एन टाइम्स ए हो जाएगा. सो फॉर एग्जांपल जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या थिंक अबाउट इट. एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स वुड वर्क राइट. सो ए और बी दोनों ओके यहाँ पे नेगेटिव है. दैट इज लाइक ओह यहाँ पे नेगेटिव है. इट्स लाइक दिस थिंग. सो बेसिकली ए बी प्लस डी ए इज एक्चुअली इक्वल टू 0 एंड दैट्स व्हाट द थिंग इज राइट. सो ये जो चीज है दिस इज wait you are saying this is actually equal to 0. A plus B is the 0 matrix or something. मतलब A square plus B square is 0 right? Because that's what it's telling us. Okay ये तो 0 ऐसा बोल रहा है ये. It's kind of weird. Okay और क्या दिया है? plus B का तो मैं स्क्वायर ढूंढना है ना इस तरह से. Okay B is correct. I mean that is definitely is correct. इनका मुझे पता नहीं. Yeah. Okay so B next question. Interesting. What if like B तुम्हारा जीरो मैट्रिक्स है. Yeah let's just say B is the zero matrix and A is the identity matrix. तो ये अपने आप हो जाएगा. Then okay सारी करेक्ट हो जाएगी in that case. Okay ये तो करेक्ट नहीं होगा and yeah because इसमें B इन्वॉल्व है. इसमें भी B इन्वॉल्व है तो ये काम नहीं करेगा. ये कर सकता है but not generally. So okay why just limit versus identity matrix. Also put I don't know scalar multiples of identity matrix. तो फिर ये काम नहीं करेगा. Then B will work all the time. Okay, next 21. So 21 नहीं, we should stop here because 20 questions, right? So हर वीडियो में मैं 20 questions करूँगा. Alright, then I'll see you guys in the next video. Bye.